중산층 전업주부 일라. 딸아이를 학교에 보내고 이어서 남편의 점심 도시락을 준비하죠. 그녀는 소원해진 남편과의 관계를 회복하고자 윗집 이모의 레시피를 전수받아 특별히 신경 써서 준비합니다. 배달원이 도착하는 시간에 맞춰 제때 도시락을 건네는 일라. 인도에서는 5천여 명의 배달원이 부인들이 만든 점심 도시락을 남편들에게 배달해 줍니다. 회계사 사무실에도 도시락이 배달되고 있네요. 이 남자는 회계사 사장이고 정년 퇴임을 앞두고 있죠. 직장인이라면 늘 기다리게 되는 점심시간입니다. 샛노란 컬이 맛있어 보이네요. 다 먹은 도시락은 다시 배달원들이 부인들에게 돌려줍니다. 깨끗하게 비워져 도착한 도시락. आंटी, पूरा खाली आया है। क्या पूरा? हाँ। मैंने बोला था ना तुझे, ये नई रेसिपी तेरे लिए कमाल कर जाएगी। 남편이 도시락을 맛있게 먹어줘서 기분이 좋아진 일라는 예쁘게 치장하고 남편을 맞이하지만 사춘기 아들처럼 인사도 없이 들어오는 남편. लंच कैसा लगा? वो आलू गोभी बनाया था ना? 일라는 콜리플라워로 만든 음식이 없습니다. नेक्स्ट मंथ मैं रिटायर हो रहा हूँ। डब्बा सर्विस का ये लास्ट मंथ है। हम नोट कर लेंगे। अरे वो ये आज डब्बा कौन बनाया? क्या? बहुत अच्छा था, वेरी गुड। कैसा बना? भाई आलू गोभी खेल कर गई, कल फिर से वही बनाते हैं। 사자는 혼자 살고 요리도 젬병이라 도시락을 서비스 받고 있었습니다. 그런데 일라의 도시락이 그에게 잘못 배달된 거였죠. 다음 날 출근하는 사잔. कल मैं ठीक 4:45 पे आया था सर, आप दिखाई नहीं दिए? इधर ही था, तुम लेट आया। ये सर ठीक 4:45 पे आया था। 4시 45분 지났는데 안 와? 난 퇴근할라요. मैं इधर ही था, तुम लेट आया। ट्रेनिंग कब शुरू कर सर? लंच के बाद में कर दे। 점심 도시락을 펼치던 사자는 도시락 맨 밑단에서 편지를 कल 발견합니다. खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। वैसे वो खाना मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाकर भेजा और जब डब्बा वापस आया कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का रास्ता वाकई पेट से होकर जाता है। उन घंटों के बदले आज भेज रही हूँ पनीर, मेरे हस्बैंड का फेवरेट। इला 자신이 먹은 도시락이 잘못 배달된 것임을 알게 된 사잔. आंटी, खाली आया है, लेकिन अपना चिट्ठी का जवाब आया है। लिखा क्या है? पढ़ तो। Dear इला, the food was very salty today. अरे समझता क्या है? एक तो डब्बा खाली किया, ऊपर से कंप्लेन कर रहा है। ये ले, डाल दे। गुड आफ्टरनून सर। कैंटीन में देखा आपको, तो आप पढ़ रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आपके डब्बे में से कमाल की खुशबू आती है सर। आपकी वाइफ ना सर जादू है उनके हाथों में, जादू है। My wife is dead. 사자는 부인과 사별하고 외로이 살고 있었던 거죠. 매일 저녁을 대충 때우다 보니 일라가 만든 집밥 도시락이 반가운 사잔. 모른 척 해주지 뭘 그렇게 쳐다보는지. 그런데 한술 뜬 사잔 매운맛에 아찔해집니다. Dear Ila, the salt was fine today. Chili was a bit on a higher side, but I had 2 bananas after lunch. They helped to extinguish the fire in my mouth. There are so many people in the city who eat only a banana or 2 for lunch. 일라의 음식에 대해 평만하던 사잔이 담담하게 주변 얘기를 들려주자 일라도 신변의 얘기를 하게 됩니다. वो कुछ नहीं बोले। यशवी स्कूल चली गई। उनके हस्बैंड पिछले 15 साल से कोमा में है। दिन भर पंखे को देखते रहते हैं और रात को सो जाते हैं। 15 साल से यही चल रहा है। वो कभी बंद नहीं होता। देशपांडे आंटी को ऐसा लगता है कि अंकल की जान उस पंखे में अटकी हुई। देशपांडे अंकल पंखे को घूरते रहते हैं, हस्बैंड फोन को, जैसे और कुछ है ही नहीं। Dear Ila, your husband sounds like a busy man. Life is very busy these days. You could find a place to sit in the train every now and then, but these days it's difficult. When my wife died, she got a horizontal burial plot. I tried to buy a burial plot for myself the other day, and what they offered me was a vertical one. I spent my whole life standing in trains and buses. Now I'll have to stand even when I'm dead. Why don't you have another child? Sometimes having a child can help a marriage. 일라는 사잔의 조언대로 신혼 때 입었던 예쁜 원피스를 입고 둘째 운을 띄우지만 लेकिन सिर्फ किस्मत से नहीं चलेगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और तुम रोज आलू गोभी क्यों बनाती हो? वो गैस हो जाती है। 다음 날 사잔이 출근을 하는데 도로가 꽉 막혀 있습니다. ऑटो, बस, एरोप्लेन, मुंबई के ट्रैफिक में आके सब अटक जाता है। सुबह सुबह वहाँ से एक औरत अपनी बच्ची को लेके कूद गई। 일라가 남편 때문에 비관하고 자살한 건 아닌가 걱정이 되는 사잔. 다행히 일라의 도시락이 도착합니다. हेलो। गुड आफ्टरनून सर।
This is the lunch time. मेरा नाम असलम शेख है सर। मैं अनाथ हूँ और ये भी खुद ही सीख लूँगा। बस यही बोलने के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच। Listen. 고아라는 말에 마음이 약해진 사잔. 일거리를 던져줍니다. सर मैं अभी गया, अभी आया सर। No, don't come back. You go. 한편 일라는 투신한 모녀의 뉴스를 접한 뒤 자살한 자신의 동생을 떠올리고 편지로 자신의 우울한 속감정을 사잔과 공유하죠. कैसे हैं सर? 사잔의 퇴근길 쉐이크가 나타납니다. स्टेशन जाते हैं। मैं भी बॉम्बे सेंट्रल उतरता हूँ। ये सब खाना वाना मैं यहीं रेडी कर लेता हूँ। सब सब्जी काट के फिट कर लेता हूँ, जाके छोंक देता हूँ बस। आप इवनिंग में क्या करते हैं सर? जाता हूँ मैं टीवी देखता हूँ। मैं पसंद खिलाता हूँ सर आपको। अभी चलिए सर आप। अभी आज? हाँ सर चलिए। नहीं। तो आज नहीं, मैं आता हूँ नेक्स्ट टाइम। कल रात हस्बैंड बहुत लेट आए। एक फ़ोन आया और वो वापस ऑफिस चले गए। आजकल सीज़न में है। मुझे लगता है आपको 그동안 일라와 나눈 소통이 메말랐던 사잔에게 단비가 되었는지 사잔은 자신만의 공간에 누군가를 초대하는 여유를 보입니다. I found old TV shows that my wife used to record. My wife used to love them. I don't know why. I wanted to see them. I watched them for hours. Every Sunday when she watched the shows, I was outside repairing my bicycle or just smoking, laughing at the same jokes over and over. I wish I had kept on looking back then. 두 사람은 얼굴도 모르지만 그렇게 속 깊은 얘기를 나누며 소통하고 있었습니다. अकाउंट को दे दिया सर। Okay. Have. यस सर। What is this? हर सिगरेट आपसे 5 मिनट छीन लेती है। पापा को लंग कैंसर है। जब दर्द बहुत बढ़ जाता है तो पापा कहते हैं कि हज़ारों और पी लेनी चाहिए थी। डोंट माइंड। 흡연 욕구를 참아보는 사잔. 그들은 서로에게 영향을 주고받으며 성장합니다. And then I treated myself to an auto rickshaw. The old houses of boys I used to play with when I was a child are gone now. My old school too. Some things are still the same. And the hospital where I was born and where my parents died, and my wife. I think we forget things if we have no one to tell them to. 잠시 생각한 일라는 딸과 옛 이야기를 합니다. मैं बताऊँ हम क्या खेलते थे? हम लोग इसके साथ घर घर खेलते होते थे। हेलो, मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। बहुत सोचा उनसे बात करूंगी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। बात करके जाती भी खाऊं। एक जगह है, यशवी ने स्कूल में सीखा है कि भूटान में सब खुश रहते हैं। 그녀의 안타까운 소식에 마음이 편치 않은 사잔. 다소 충동적이긴 하지만 오랜만에 마음이 설레는 사잔. मतलब कहीं खोए हैं क्या सर? कभी भूटान गया क्या? सर वैसे तो मैं सऊदी गया हूँ नासिक की जगह भूटान सेटल हुआ था। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुँचा देती है। तुम बोले तुम तो अनाथ हो। लेकिन मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं ये बोलने में वजन आता है सर, अच्छा लगता है। चिट्ठियों में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत आसान है। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। कल वहाँ मिले 1 बजे। आपको वो कूलर कैफे पता है? 직접 만나서 얘기를 나누기로 한 두 사람. 그날 오후 과장의 호출을 받은 사잔. All the pay orders are wrong. Sheikh's initials are all over the place. 사잔이 셰이크에게 시켰던 일이 잘못된 거죠. I need you to review this. 셰이크의 실수를 자신의 잘못으로 덮는 사잔. I made the pay orders. You don't have to defend 35 years of service, and you have not made one single mistake. And one more thing. Why do these files all smell of vegetables? सो सब बचा लिया आपने। Don't you ever cut your bloody vegetables on the office file? तुमको नहीं आता है तो तुम जाओ, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप सिखाओगे मुझे। सामने साथ घर चलिए ना सर, डिनर के लिए। पसंद बनाए हैं सर मैंने। Unbelievable. 이 타임에 초대하는 셰이크. 고아잉크가 생존하는 방법일지도요. 사잔은 초대에 응하고 셰이크의 약혼녀와도 함께 식사를 합니다. एक्चुअली इसके अब्बा ने मना कर दिया। बोलते लड़का अनाथ है, हार्ट भी कोई खास नहीं, काला का लोटा है। मतलब अब्बा भी मान गए हैं, शादी भी हो रही है। मेरे सस बन जाते शादी के लिए, मतलब गार्जियन बन जाते तो। 없고? 일라와 만나기로 한 다음 날 아침, 특별히 깔끔하게 신경 쓰는 사잔. 그런데 무언가를 느낍니다. 점심 약속 시간인 1시가 다가오고 사잔을 기다리는 일라. 하지만 사잔은 나타나지 않습니다. 다음날 일라의 도시락이 사잔에게 도착하는데 빈 도시락입니다. I got the lunchbox today. There was nothing in it. Yesterday you waited in the restaurant for me for a long time. But before that, that same morning, I forgot something in the bathroom. I went back in to get it. The bathroom smelled the same, exactly the same as it used to be after my grandfather had been in the shower.
I don't know when I became old. I came to the restaurant while you were waiting. You look beautiful. You're young. You can dream. And for some time you let me into your dreams. And I want to thank you for that. लड़के वाले आप लोग लेफ्ट पे आ जाइए. Smile please. 쉐이크의 결혼식에 참석한 후 원래 계획대로 뭄바이를 떠나는 사잔. Goodbye, Sheikh. नासिक का ना कभी. 사잔이 퇴직한 줄 모르는 일라는 직접 사잔을 찾아 나섭니다. ये जो डब्बा है ना, ये गलत एड्रेस पे जा रहा है. वो एड्रेस पे जाता है. तो वाला आया था. वो लोग ने इधर इतना बम्बई में टिफिन देखा. वो तो कभी टिफिन वाले का गलत नहीं हुआ. कहीं तो जा रहा है ना, कोई तो खा रहा है ना. जिस बिल्डिंग में जाता है मुझे उस बिल्डिंग का एड्रेस चाहिए. 사잔이 다니던 사무실에 찾아온 일라. ये साजन फर्नांडिस का डेस्क है ये. वो तो चले गए. तो कहाँ मिलेंगे? नासिक चले गए. आप नासिक जा रहे हो? मैं कुछ साल पहले रिटायर हो. 나시크행 기차에 오른 사자는 맞은편 할아버지를 보고 자신이 아직 나시크로 갈 때가 아님을 깨닫고 돌아옵니다. 그리고 세상과 담을 쌓고 지내던 사자는 일라와의 해프닝 이후 한 단계 성장했습니다. 마음 떠난 남편 때문에 힘들어하던 일라 역시 자신을 위한 삶을 결심합니다. नासिक पहुंच गए होंगे. मैं आज सुबह उठी और मैंने अपने सारे गहने बेच दिए. सुना है कि हमारा 1 रुपया भूटान में 5 के बराबर है. कुछ टाइम तक शायद चल जाएगा. आज यशवी जब स्कूल से आएगी मैंने अपना सामान बांध लिया होगा और हम दोपहर की गाड़ी से निकल जाएंगे. शायद मुझे ये चिट्ठी अपने पास ही रखनी चाहिए और सालों बाद इसे फिर पढ़ना चाहिए. मैंने कहीं पढ़ा था कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है. 영화는 이렇게 끝이 납니다. 우리는 인생에서 우리가 내리는 결정이 잘못된 선택이 될까 두려워합니다. 하지만 잘못한 기차가 목적지에 데려다 준다는 인도 속담처럼 잘못되었다고 믿었던 선택이 때로는 행복을 가져다 줄 수도 있고 인생은 알 수 없다고 영화는 말합니다. 소외되고 외로운 인간 군상들이 소통을 통해 각자 새로운 삶에 도전할 용기를 내게 되는 영화 런치박스였습니다.